श्री साई राम। साई माँ के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्यार भरा साई राम। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगी जो मेरे जीवन के सबसे प्रेशियस पल हैं। बात 1975-76 की है। माय फादर जो एक आर्मी ऑफिसर थे was posted in Mau in Madhya Pradesh near Indore. My mother was a classical singer who she was always interested in music और वो शबद गाती थी, तो गुरुद्वारे में शबद गाती थी। इन माओ जो गुरुद्वारा था उसके जो ज्ञानी जी थे, द पुजारी, जो हम लोग उनको ज्ञानी जी बोलते हैं। जो गुरुद्वारे के जो ज्ञानी जी थे वो मम्मा से आके शबद सीखते थे और रोज रियाज करते थे। उनके साथ एक मुस्लिम तबलची थे जो तबला बजाते थे, वो एक मुसलमान थे और ये आके मम्मा के साथ प्रैक्टिस करते थे और फिर AIR इंदौर में जाके अपना प्रेजेंटेशन देते थे। तो मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देती हूँ कि मेरे फादर एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, टिपिकल ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। ही वांटेड एवरीथिंग ऑन टाइम, काफी टाइम के पाबंदी थे और उनको सब कुछ मतलब टाइम से चाहिए होता था। सो माय मदर ऐसे ही एक दिन प्रैक्टिस कर रहे थे, रियाज कर रहे थे और उस दिन शबद गा रहे थे। आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए हैं, सुपन चरित्र मित्र बालक बने बचित्र, सुपन चरित्र मित्र आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए हैं। इस शब्द का बेसिक मीनिंग था कि आज भगवान साक्षात मेरे घर में आए हैं और वो इस शब्द में इतना लीन हो गए, तीनों के तीनों, कि गाते ही चले जा रहे थे, गाते ही चले जा रहे थे। जब फाइनली शब्द उन्होंने एंड करा, तीनों के आंसू बही जा रहे थे, बही जा रहे थे, सब भाव विभोर हो गए थे। और ज्ञानी जी ने माँ को देख के बोला, बीबा जी, आज तो ऐसे लगा कि साक्षात ये दीवारें फटी हैं और भगवान हमारे सामने खड़े हैं। सो इट वॉज अ वेरी मूविंग इंसिडेंट एंड मम्मा उस टाइम सडनली रियलाइज्ड कि लंच का टाइम हो गया था एंड मेरे फादर का आने का टाइम हो गया था। सो शी समहाउ क्विकली पैक्ड देम ऑफ कि हाँ जी ठीक है, थैंक यू साईराम, साईराम तो नहीं, अच्छा सत श्री अकाल, आप जा रहे हैं, आप जाइए। तो वो चले गए और वहां से मम्मा किचन में आई। हम लोग का घर जो था इट वाज अ टिपिकल ब्रिटिश बंगलो। तो सामने ड्राइववे था, दोनों साइड से एंट्री एग्जिट, और पीछे भी एक एंट्री थी और किचन जो था वो पीछे की साइड पे था। सो मम्मा जल्दी से किचन में गई और देखने गई कि खाना रेडी है कि नहीं, क्योंकि जो हमारी बाई थी, वो जो हमारे घर काम करती थी, वो थोड़ा स्लो थी, उनका नाम रामरती था। तो जब मम्मा उधर गई तो रामरती बाई ने बोला, मेम साहब जी कोई आया है। और मम्मा हमेशा कोई भी अगर कोई भी मांगने वाला आता था, कोई आता था, तो मम्मा उसको खाली हाथ कभी नहीं भेजती थी, कुछ ना कुछ जरूर देती थी। तो उसको पता था, तो उन्होंने बोला मेम साहब जी कोई आए हैं। तो मम्मा फटाफट गई बाहर, किचन के मतलब ऑन द बैक साइड उधर गई। तो ऐसे स्टेप्स थे और नीचे एक फकीर खड़े थे। उन्होंने बिल्कुल शिरडी बाबा का लिबास पहना हुआ था, रोब थी, कफनी थी और एक झोला था। तो मम्मा ने उनसे पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला, कुछ नहीं माँ, एक गिलास पानी देना,
माँ। मम्मा ने थोड़ा चौंक गई, उन्होंने उधर ही सामने घड़ा था, रामरती बाई को बोला आप उसमें से पानी दीजिए। तो उन्होंने एक ग्लास में पानी निकाल के घड़े से उनको दिया। तो वो उन्होंने अपने हाथ में ग्लास लिया और मम्मी की तरफ फिर हाथ बढ़ा के बोला आप लो माँ। मम्मा थोड़ा चौंक गई कि व्हाई इज ही गिविंग इट बैक टू मी, ही आस्क्ड। उन्होंने पूछा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे क्यों वापस दे रही है। तो anyway she got a little this thing, so she told the बाई कि तुम लो। सो द बाई टुक इट एंड शी सेज मेम साहब ये तो बहुत ही मीठा है। सो एकदम अमृत जैसा मीठा है। तो मम्मा ऑल्सो देन उन्होंने भी थोड़ा पिया तो उनको बहुत मीठा लगा। but without thinking she dropped some of it and a little bit she saved for all of us। उनको ये बड़ा फनी लग रहा था कि मम्मी ये मतलब जो आए हैं ये बार बार माँ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माँ इज नॉट अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द नॉर्थ, इट इज यूज्ड इन द साउथ। तो फिर मम्मा ने उनसे पूछा और मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। सो द फकीर टोल्ड हर, ही टुक आउट स्वामी's photograph from his bag and he showed her। जो उनके पास झोला था उसमें से उन्होंने बाबा की फोटो निकाली और पूछा आप इनमें मानते हैं। तो मम्मा वॉज ऑलवेज अ वेरी डिवाउट पर्सन, तो शी सेड जो भगवान का रास्ता दिखाता है मैं उनका हमेशा आदर करती हूँ और जनहित के लिए सब कुछ होता है। सो ही टोल्ड हर कि आप इनके दर्शन के लिए बहुत जल्दी जाएंगी। तो मैं मम्मा वाज क्वाइट जैप्ड कि मैं ना जानती हूँ क्या है कौन, मतलब उनको आइडिया तो था कि शी हैड हैड दर्शन ऑफ स्वामी इन 71 72 इन शिवम फ्रॉम वेरी फार ऑफ। तो उनको पता था कि स्वामी है, तो उन्होंने कहा अच्छा। एंड उतने में फटाफट शी वेंट बिकॉज शी वाज गेटिंग वरिड कि डैडी आने वाले हैं, और फटाफट शी वेंट इनसाइड to get some money, and by the time she came out the fakir had left from there। so mama said वो कहाँ गए, तो उन्होंने the बाई said वो तो चले गए। and in the meantime my father entered from the front and in his vehicle and he saw this fakir going out of the gate। so he asked mummy कि ये कौन आए थे, ये कौन थे क्या। तो मम्मा जस्ट रिलेटेड एवरीथिंग कि ऐसे ऐसे एक बाबा जी आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला और मेरे को अमृत दिया, मतलब पानी दिया, फिर वो अमृत में हो गया एकदम मीठा, पता नहीं कैसे। फिर उन्होंने साईं बाबा की फोटो निकाली और बोला आप इनके दर्शन के लिए जाएंगे, पता नहीं कैसे क्या। सो माय फादर टर्न्स अराउंड एंड टेल्स हर उनको ड्राइंग रूम में क्यों नहीं बिठाया। सो मम्मी इज लाइक मैं किसी को भी ड्राइंग रूम में थोड़ी ना बिठा सकती हूँ, कोई भी ऐसे आए तो। सो एनीवे ही जस्ट दिस ऑल हैपेंड इन द पोर्च आउटसाइड, मतलब सामने की तरफ ही ये बात हो रही थी। तो डैडी ने अपनी गाड़ी ऑन करके सीधा बाहर निकल गए। अब वो एक ऐसी रोड थी कि एक सीधी रोड थी, तो ये बात को करीब 3 मिनट 2 ढाई मिनट हुए होंगे। तो डैडी उनके पीछे गए पर दोनों तरफ उनको कहीं भी वो फकीर नहीं दिखे। उन्होंने बहुत ढूंढा पर उनको वो मिले नहीं। फिर डैडी वापस आ गए और ऐसे ही घूमते घूमते एक बारी मतलब वो वॉक्स पे जाते थे तो उनको कहीं से भजन्स की आवाज आ रही थी। एंड लाइक आई सेड माय पेरेंट्स बोथ ऑफ देम वर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो जब वो चल रहे थे तो गए, उन्होंने ये भजन की आवाजें आई तो उस भजन की तरफ चले गए। तो गए तो वो टाउन हॉल था और टाउन हॉल में स्वामी के भजन हो रहे थे। तो उन्होंने बैठ के उसका पूरा आनंद लिया, सब लिया। जब बाहर आए तो डैडी के एक कोर्समेट मिले। तो उन्होंने ऐसे ही बोला आप कैसे इधर आए, तो उन्होंने बोला नहीं हम ऐसे वॉक कर रहे थे तो हमको पता चला यहाँ भजन हो रहे हैं तो हम लोग ऐसे आ गए। तो ऐसे ही बात बात में मतलब देवर कोलीग्स एंड फ्रेंड्स, तो ऐसी बात हुई तो कह रहे थे अच्छा व्हाट आर यू डूइंग एंड ऑल। तो एक्चुअली आशा मेरा आंटी माइट बी हियर, आई डोंट नो, बट जनरल मेरा नाउ एंड he was the gentleman who my father was talking to।
And Asha मेरा आंटी was going to पुट्टापर्थी. उनका प्रोग्राम था पुट्टापर्थी जाने का फरवरी में. तो प्रोग्राम मेरे फादर ने सडनली बोला, माय मदर्स नेम वाज सतमंदिर, दे यूज्ड टू कॉल हर सती. सती, व्हाई डोंट यू आल्सो गो? सो माय मदर वाज लाइक अ लिटिल टेकन अबैक कि मैं कैसे चली जाऊं ऐसे छोड़ के, मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाऊंगी. सो डैडी सेड नहीं नहीं चली जा, व्हाट आर यू डूइंग, यू डोंट वरी. सो आई वाज द यंगेस्ट इन द फैमिली, आई हैव टू ओल्डर ब्रदर्स. So I was just about 7, 8 years old, and he said ki nahi nahi you go. So mama said nahi nahi I can't leave her and go. Actually they used to be a little overprotective about me, because I was a daughter that survived after 7 generations in the family. So and my grandmother, my dadi, was very particular and had told my mother strictly ki iska bahut hi dhyan rakhna, we have to really take care of her. So they used to be a little worried about me. So, and I was the pampered one. So it so happened the whole program got fixed. My father said, if you are the mother, I am the father. You go, I will take care of her. It is my responsibility. I will look after. You go and see what it is all about. Go and see what Sai Baba and Puttaparthi is all about. So they booked the tickets and everything, and they were supposed to go. The day before Mama was supposed to travel, I got very high fever, about 104 or 105 temperature. And when my mama saw this, she said, now I'm not going. I am not going to go. You can cancel my ticket. अब तो मैं नहीं जा रही. इसको मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी. So my father, being the practical man that he was, he said, अच्छा ऐसे करते हैं. अगर शाम तक इसका fever नीचे नहीं आया, don't go. We'll cancel your ticket. Otherwise, if the fever comes down, you go. So it was decided, okay, fine. So I took a nap in the afternoon, and I very clearly remember Swami came in my dream and he blessed me. And he blessed me and he said, why fear when I am here? As I'm narrating this also, I still get goosebumps because it is so vivid in my imagination. He was right there and he told me this. And by the time I got up in the afternoon, after my nap, I was playing around and they checked my temperature and I was normal. And I told my parents कि ऐसे साई बाबा आए थे और उन्होंने मुझे ऐसे bless करके, he said, why fear when I am here? And I was healed and hearty, and as a child, I was playing around. So my mother then had to make her program and she had to go to Puttaparthi. Of course, she went there and Swami called her for an interview and blessed her. And the blessing that she got was totally like her father blessing her. She felt it was her father who was blessing her. And she was totally in awe and in love with Swami. After that, she had a few, she had always wanted to meet Swami's, when she was there, she learned about his family and everything. So she wanted to meet. So finally she got to see the sisters and everything, but she hadn't got to see the brother or anybody. So one day she had to go back. So she was trying to find out the bus timings of the buses which leave from Puttaparthi to Dharmavaram. So she went to the bus stand and there was a gentleman reading the newspaper over there. So since everything was in Telugu, she could not follow. So she asked this gentleman. So he guided her, okay, this is the bus you have to take and all that. And then she said, thank you. And she came. Somebody just came out of the blue and asked her, आपको पता है आप किससे बात कर रहे थे? So my mother said, nahi. So he said, वो स्वामी के भाई थे. So, small little things like this. Swami just makes his way in and he kind of just, encourages us and he just gives us all his love and care. So my mother was very happy and she came back from Parthi. And then again, as
I mean, that February, so she was there for Shivratri. She saw the Shivling being materialized by Swami. And she came back and she told us that we all as a family have to go. Then that June, we all went. And again, Swami was very gracious and kind. And as a family, he blessed all of us a lot. After that, I mean, so our journey with Sai started. After this, many a time my mother came back, and many a time my mother tried to, tell the maid, the Ramrati Bai, कि आप कहीं और काम ढूंढ लो, because she was very slow in her work. But that lady would never leave the job. She would never leave the job. Mama tried many times, but it didn't work out. So once when daddy's transfer came from Mao, all the bags were packed, the luggage was packed, everything was done. Now, one more thing I would like to mention here. Ramrati Bai had a daughter who was married, but was not having any issue, was not being blessed by a child. Every time she would conceive, she would have an abortion. And over the period of time, Mama gave away Bhuti and everything, and the lady conceived a child, and Ramrati Bai was very happy. So when the time for my father's transfer came and we all had packed our bags, our luggage had gone, and we were sitting in the veranda outside. The train there used to come at 2:30 in the midnight, in the middle of the night. So we all were packed and sitting, and Ramrati Bai came to my mother and said, "Mem sahab, मेरे को आपसे एक बात करनी है." So my mother said, "हाँ जी बोलो." So she said, मेम साहब आपने कितनी बारी मुझे बोला कि तुम नौकरी छोड़ दो, तुम चले जाओ, तुम किसी और के घर नौकरी देख लो, आपने बोला था ना? सो माय मम्मी सेड, हाँ बहुत बारी बोला रामरती, पर आप गए नहीं. तो उन्होंने बोला, आपको याद है वो एक दिन वो फकीर आए थे? सो माय मदर सेड, हाँ जी याद है. कहते हैं जब आप अंदर गए थे तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी. उन्होंने कहा था, ये साईं की फेरी है, इस मेम साहब का काम मत छोड़ना. तुमको वो बोलेगी कि काम छोड़ के जाओ, तुम ये काम मत छोड़ना, तुमको बहुत मेवा मिलेगा, भगवान तुम्हें बहुत मेवा देंगे. और मेम साहब इसी कारण मैंने आज तक आपकी नौकरी नहीं छोड़ी. और आप देखिए कि मेरे घर, मेरे बेटी के घर उसके बच्चे हुए, ये सब उस जो फकीर आए थे उनका कहना. That is when we came to know, yes, it was Swami who had come in the form of a fakir to our house. So every year after that, whenever we had our holidays, we used to go to Parti. वो हमारा like that was our second home. मतलब we used to go. जब भी we could, we used to go to Parti. So over the years, Swami was very kind. He used to keep blessing us. So on one such trip, it happened to be my parents' anniversary. And Swami called us for an interview, and he told my mother, मैं ना तुमको जोगाराव के थ्रू एक साड़ी भेजूंगा, वो पहन के आना, मैं फिर तुमको ब्लेसिंग दूंगा. So Mama was very happy. Okay, fine. So the next day, one beautiful sari in the evening. This happened in the morning. In the evening, a beautiful sari came for Mama, and Colonel Jogarao got it for Mama and gave it to her and said, Swami has sent this for you. So the next day, we all, nicely dressed up and everything. But you know how sometimes we get carried away. We got late for darshan. Mummy and me, we got late for darshan. And the lines had all gone in. This is the times when there was still the sand. There was no Kulwanthal or anything like that. There was the sand days. And all the line, the Swami was just about to come out. So we sat outside the boundary wall, behind the patients. The patients used to sit in chairs. So behind the patients, behind the wall, outside the compound, we were sitting. And the loving Sai Ma that our Sai is, he came all the way. He came behind the patients' chairs.
And he asked my mother, "Sari kaisa hai? Acha laga?" I mean, for God to come and do this was just a loving mother's side. Just so caring and loving all the time. I'll quickly narrate another incident because I think I am running out of time. So, this happened when I was in college in my second year. After the second year, we had gone to Kodaikanal. Swami in the summer holidays. He used to go to Kodaikanal. So that year, my father and me only went. And we went, and every day I had the beautiful chance of sitting in the first row. Every day I got the first, just right next to his chair, I used to sit. And, I used to just visualize that Swami is walking towards me. He's sitting on the chair, and I'm doing Path Seva for him. I'm washing his feet with, rose water. And I used to meditate like that. And every day, you won't believe, every day he would come and give me namaskar. Every single day. Now, once after darshan was over, my father and all was still there. So he had the privilege that he could go, where the boys were and be there. So Swami was talking to him and blessing him and giving him vibhuti. Now the darshan was over. Everyone from the ladies' side had gone. I was the only girl there. And we were always taught in college that we should not be seen where the brothers are. So I was hiding behind the institute bus. I was hiding behind that and seeing what was happening. And, being, we're always, oh my God, these boys are so lucky. They get a chance. I wish I was a boy. I'm a girl. I have to stay away. I can't go where Swami is. All these thoughts, monkey mind, going on. And you won't believe, Swami called me from behind that bus. He called me, gave me vibhuti, gave me namaskar, blessed me. And, it was such a surreal experience because, to tell me that don't worry, I know. And that is what I want to reiterate, that Swami knows everything, every single thing of us. He's always with us, always loving us. Right? He knows what is going on in our minds, always there, trying to tell us, don't worry, I am with you. I am with you. And all that he's emphasized is love, love. And he is the epitome of love. Like he always says, live with love, in love, for love. I will just finish with this beautiful hymn. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. No reason for love, no season for love, no birth, no death. I'm sorry, I was going to sing something else and this just came out. I just wanted to end it with this. Love it was that made us, and it was love that saved us. Love was God's plan when he made man. God's divine nature is love. Born of God's love, we must love him. That's why he made us to love him. But only when we love all men can we partake of God's love. Jai Sai Ram.